ये कुछ चीज हमने पिछले क्लास में हमारे यहाँ पे देखी थी. So आज के क्लास में we'll try to complete the chapter. The remaining part in the chapter we'll try to cover that and we'll try to solve some questions. कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और कुछ और हमारे सवाल जो यहाँ पे वो हम यहाँ पे will do the remaining portion which has been there in this part. Okay. चलिए. Right now we have 3 schools with us. We have. Okay, so. Now what we have to start with, Aj, we have to start the embryo development. That is something we'll have to start with. Okay, so let's have a look what is the embryo development. So basically what happens in embryo development, once you have actually formed your particular inner cell mass. So you should know this thing very clearly कि जैसे आपका एक बार आपका inner cell mass बन गया, so you know that you will have a blastocyst and a blastocyst will be having your inner cell mass in one of the corner. Now once you have this inner cell mass getting formed, now in this inner cell mass what will happen, there will be a formation of germ layer. तो आपका यहाँ पे जो ICM है, inner cell mass जो आपके सामने यहाँ पे है, इसके अंदर आपके यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर आपके यहाँ पे germ layers बनना चालू करेंगे. So in this you will find your 3 germ layers are getting formed and those germ layers are going to be your ectoderm, mesoderm and endoderm. तो जब आपको ये 3 लेयर आपको यहाँ पे बनते हुए आपको दिखने लगती है, दैट इज व्हेन यू विल से द गैस्ट्रुलेशन हैज इनिशिएटेड. तब आप कह दो कि आपके यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन आपके यहाँ पे चालू हो चुका है. सो व्हेन यू फाइंड दिस 3 germ layer getting formed over here, that's when you will say your gastulation has initiated. So gastrulation has started. Now this gastrulation के बाद जो आपकी 3 लेयर आपके यहाँ पे बन जाती है, after the 3 layers have been formed, now these 3 layers will form the complete embryo. ये तीनों लेयर मिलके आपका पूरा एम्ब्रियो यहाँ पे बना के देंगे एंड दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. अब आपको ये बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं सीखना है, नहीं जानना है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे कैसे हो रहा है. बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये प्रोसेस के दौरान आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको मिलेगी वहां पे एंड हाउ द एम्ब्रियो इज गोइंग टू चेंज से लेके टिल योर 9 month के अंदर. तो आपके चेंजेस आपको वहां पे कैसे मिलेंगे, दैट इज वन थिंग वी हैव टू सी इन दिस. सो देयर आर फ्यू थिंग्स फ्रॉम द इनसाइड व्हिच हैज टू बी रिमेंबर्ड इन दिस. तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. So immediately after implantation, the inner cell mass differentiate into outer layer called as ectoderm, inner layer as a endoderm, and then बाद में आपका mesoderm भी आपका बन जाता है. So you have a ectoderm, mesoderm, endoderm is getting formed, and उसके बाद you will find a mesoderm soon appears between the ectoderm and the mesoderm. So once you have formed these 3 layers, now they will give rise to the embryo. अब यहाँ से आपका embryo formation आपका यहाँ पे होगा. So when I say embryo, then it means like now you will have a small structure, which will have small appendages, you will have small brain, will start happening over there. तो ये चीज आपको होते हुए मिलेगी वहां पे. आई थिंक समवन हैज रेज्ड देयर हैंड. हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका. स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही, व्हाट इज हैपनिंग? ऑलराइट, ओके. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ठीक है. सो 3 germ layers जो आपके यहाँ पे, इससे आपका पूरा ऑर्गन, आपके टिश्यू सब कुछ आपके यहाँ पे बनेंगे. सो ऑल दिस 3 germ layers will form the complete organ system inside your body. सो ये बात आपको याद रखनी है. These 3 germ cells, that's what they are known for. Now, inner cell mass contains certain cells called as stem cells, which have a potency to give rise to the tissues and the organs. जब भी आपके सामने term आएगा stem cells, तो stem cells को आपको यहाँ पे याद रखना है. When you get a term like a stem cells, so these are the cells which has a potential to form any kind of cell. ये आपके कुछ वो cells होते हैं which can have a potential to form any type of cell. So they can form any type of cell. They can form anything. Any type of cell can be formed by them. Can be formed. Stem cells are the cells जहां से आप अपना किडनी भी बनाओगे, हार्ट भी बनाओगे, ब्रेन भी बनाओगे, आप अपना यहाँ पे epithelial tissue बनाओगे. So all the cells are getting formed from this particular site. So this is one thing you have to know. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आपके stem cells हैं, and they have a property to form anything. चाहे आपके brain cells हो, चाहे आपके stomach का cells हो, they can form anything. So एक आपको यहाँ पे property याद रखनी है. And that property is called as मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, that property is called as my totipotency. Totipotency. Totipotency is the property that says that your cell has a potential to form any kind of cell.
So when you have a cell which is an undifferentiated cell, और वो कोई भी टाइप का सेल बना सकता है, कोई भी टाइप का ऑर्गन या कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टोटिपोटेंसी. तो स्टेम सेल्स आर गोइंग टू शो what you can call it as a totipotency. Okay, so you have an inner cell mass, and then you will find all the kind of cells can be formed from the stem cells. उनमें से आप अलग-अलग टाइप के आप यहाँ पे सेल्स बना सकते हो. Okay, अब ये वाली चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. They can become a question like a statement के तरीके आपके सामने आ सकता है. कुछ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. So प्रेगनेंसी टाइम आपको यहाँ पे होता है 9 months का. अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जिसका सबसे लॉन्गेस्ट होता है गैस्ट्रेशन पीरियड, वो होता है एलिफेंट का. सो एलिफेंट का गैस्ट्रेशन पीरियड आपको यहाँ पे रहेगा 22 months का, almost 2 years. But humans will have a gestation period of around 9 months. After 1 month, the embryo heart is formed. याद रखना, after 1 month, you will find a small heart gets developed in the, like in the person's body. In that person's, like in that embryo, you will find a small heart will be seen. तो आपके सामने यही सवाल आएंगे कि 4 हफ्तों के बाद क्या फॉर्मेशन आपको मिलेगा, 8 हफ्तों के बाद आपको क्या फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे. So you should know this thing very carefully that after 1 month you will find the heart is getting formed over there. A small heart will be seen over there. Well, the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. One can actually listen to the heart of the embryo and you can actually see that it is growing over there. Right? By the end of the second month of the pregnancy, the fetus develops a limbs and digit. यहाँ पे आपके अब लिम्स और डिजिट आपके यहाँ पे आ जाएंगे. सो दैट्स द सेकंड थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग कि आपके आर्म्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ. दैट आल्सो मींस आफ्टर द 8 weeks. सो सेकंड मंथ अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको मालूम है दैट्स योर 8 weeks. और 8 weeks के बाद आपको लिम्स यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. दैट इज व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर. ओके, बाय द एंड ऑफ द 12 weeks, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स हैव बीन फॉर्म्ड. आपके सारे मेजर ऑर्गन्स जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, दे हैव बीन फॉर्म्ड. So again, that can become a statement for you. So by the end of the first trimester, by the end of the 12 weeks, by the end of the 3 months, you will find all the major organs are getting formed over there. सारे major organs आपके यहाँ पे बन चुके होंगे. The first movement of the fetus, appearance of the hair on the head, and are usually observed during the 5th month. तो बेबी का मूवमेंट जो चालू होता है या उसके बॉडी के ऊपर जो पहले हेयर आपको दिखने लगते हैं, that will all happen in the 5th month, right? तो ये सभी जो आपको इनसाइड में मेंशन किया हुआ वही सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट. By the end of the 24 weeks, right, the body is covered with the fine hairs, eyelids, separate eyelashes. ये सब आपको मिलेगा by the end of 24 weeks तक. You will find this happening. That means roughly after 6 months. 6 months के बाद these are the things you will find. The body has been formed, fine hairs, limbs, eyelids can be clearly seen in the baby's body. So that's a 6-month story. And by the end of the 9th month of the pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for the delivery. So 9 months के बाद the fetus is going to be very much developed for the delivery of the baby. So that is what we will find happening after the 9 months. Okay. So अब मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे by the end of which month fetus develop your limbs and digit. आपके limbs यहाँ पे कौन से month के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे थे? Quickly answer this ताकि हम लोग आगे बढ़ सके जल्दी से. After which month I will get to see कि limbs दोनों आपके यहाँ पे fetus के यहाँ पे दिख रहे हैं. Anyone? या बहुत जल्दी जल्दी हमने डेवलपमेंट कर लिया फीटस का. It is going to be after the second month, right? Second month के बाद यहाँ पे फीटस के limbs and forelimbs will be seen over there. True. So after second month you will find that happening. This is a summary of the things which we have seen. Placenta के बारे में याद रखना. Placenta will have a number of role to be played. Placenta will play a role in my like transport of my oxygen, renewal of my CO2, nutrients का transport करेगा वो, waste material को भी यहाँ पे निकालेगा. So these are the things you know that. याद रखना placenta formation के लिए you will have a trophoblast cell are getting involved. Your trophoblast cell are getting involved because यहाँ से आपका निकलेगा आपका finger-like projection. We'll have a finger-like projection coming out of the trophoblast cells, and that projection is called as my chorionic villi. Right? This will get inside the uterine tissue to form the placenta. This will get inside the uterine tissue to form the placenta. That is one thing you have to know. Placenta is connected to the embryo through umbilical cord. So placenta and embryo के बीच जो connection आपका होता है, that's your umbilical cord, जिसको हम बाद में remove करेंगे after the delivery. This is the one which is getting cut. Okay. Placenta also acts as endocrine tissue, something we have already discussed this. So let's not spend more time on this. And these are the few things you have to know. Now let's talk about my parturition. Parturition and lactation start करने के पहले, which happens to be my last topic.
क्विकली आंसर दिस, व्हिच हार्मोन इज रिलीज बाय द प्लेसेंटा, इनमें से कौन से हार्मोन आपके यहाँ पे है जो आपके प्लेसेंटा यहाँ पे रिलीज करेंगे? टेक योर टाइम एंड टेल अस द करेक्ट आंसर. राइट, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. यस, योर एचपीएल, एचसीजी एंड एस्ट्रोजन, ऑल थ्री हार्मोन्स आर कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा. ये तीनों के तीनों हार्मोन आपके यहाँ पे प्लेसेंटा से आपके यहाँ पे आ रहे हैं. याद रखना, HPL is a hormone, human placental lactogen, which will help in the development of the mammary gland. Your human chorionic gonadotropin, ये जो आपका हार्मोन आ रहा है, दो बातें याद रखना. First of all, this hormone maintains the corpus luteum. That's one thing. Second thing, HCG is something you can find in the urine of a pregnant woman. So these are the two things you have to know. Hormones released during the pregnancy helps in. हार्मोन जो यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज करे जा रहे हैं वो यहाँ पे किस तरीके से मदद करते हैं? Right. So these hormones will ultimately play the role in the maintenance of pregnancy. That is something done by these particular hormones will make sure that your pregnancy is maintained over here. Then we have a placenta is attached to the embryo. Placenta embryo से attached जो आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है? इसका कौन होगा यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे? Yes, that's going to be your umbilical cord. बिल्कुल. So umbilical cord is the one, because of that you will find your placenta is attached to the embryo. Okay. So ये बात भी आपको यार, these are very simple questions you have to remember that placenta, अगर आपसे कोई पूछे embryo and mother के बीच में connection आपका कौन है, then you will say placenta. But if they ask you what is the connection between the embryo and the placenta, if they ask you what is the connection between the embryo and the placenta, then you will say it's umbilical cord. So option A becomes the correct answer. Limbs and organs are something we have discussed. Limbs, we have discussed this thing. This will come in the second one, right? Stem cells आपको कहाँ मिल जाते हैं? Where do I get to see the stem cells? Right? अगर आप लोग मुझे अपना आंसर बता रहे हो यहाँ पे as answer 2, तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. Inner cell mass will have the stem cells. And these stem cells will have a potential. They have this kind of property of making every kind of cell. और उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ टोटिपोटेंसी. सो दिस स्टेम सेल्स आर गोइंग टू हैव समथिंग कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. Then, so this is something we have done. Now let's talk about the parturition. So that is nothing but this is the event when you're finding that the baby will get delivered. तो ये आपका वो आपका इवेंट यहाँ पे आपको मिलेगा जिस टाइम पे the baby will ultimately get delivered over here. Okay. So यहाँ पे you will find number of hormones will get involved when we talk about the parturitions. No? So you should know two things. You will have something like your oxytocin. So you have one hormone called as your oxytocin. Now oxytocin आपका आता कहाँ से? तो ये बात याद रखना, oxytocin आपका हमेशा आएगा from the posterior part of my pituitary gland. It will come from the posterior pituitary. Okay. तो पोस्टर पिट्यूटरी से आपका यहाँ पे आ रहा होता है आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन. और ऑक्सीटोसिन बनाता कौन है? सो यू शुड नो दैट ऑक्सीटोसिन इज समथिंग फॉर्म बाय माय हाइपोथैलेमस. याद रखना, इसको बनाया जाता है बाय माय हाइपोथैलेमस. अब आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है. ऑक्सीटोसिन विल हैव अ रोल इन पार्चुरेशन. सो बेसिकली इट विल एक्चुअली प्ले अ रोल इन द rhythmic contraction of the uterus so that the childbirth can happen very easily. So oxytocin will have a role played in the parturition. So rhythmic contraction of the uterus will be happening because of the oxytocin. तो ये बात तो आपको यहाँ पे रखनी है याद. उसके साथ साथ आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है that oxytocin will have one more role. Oxytocin also have a role that is separate from the parturition, but you should know this role. Oxytocin can also promote milk ejection. ये मैं आपको पहले बताया था. It will promote the milk ejection from mammary glands. So mammary glands से जो milk ejection आपका हो रहा होगा during the breastfeeding, that is also happening under the influence of the oxytocin. So milk formation is something happening because of the prolactin, but ejection of milk from the mammary glands is something which is happening because of the oxytocin. तो ये दो रोल याद रखना. पार्चुरेशन में तो इसका रोल है ही यहाँ पे, but it will also have a role in my ejection of the milk from the mammary gland. These are the two rules you have to know about the oxytocin.
अब पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन आपकी मदद कर रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव वन मोर हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय रिलैक्सिन. देयर इज वन मोर हार्मोन कॉल्ड एज माय रिलैक्सिन. रिलैक्सिन भी आपका यहाँ पे आ रहा होता है, और रिलैक्सिन का हम इस्तेमाल करते हैं आपके पार्चुरेशन के दौरान. सो रिलैक्सिन एज अ हार्मोन आपके यहाँ पे क्या करेगा, रिलैक्सिन एज अ हार्मोन आपके यहाँ पे आएगा एंड गोइंग टू रिलैक्स द बर्थ कैनाल. बेसिकली इट विल कम एंड रिलैक्स द मसल्स ऑफ द बर्थ कैनाल, ताकि चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस काफी स्मूथली हो. तो रिलैक्सिन आपका कहां से आ रहा है, रिलैक्सिन इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द ओवरी. रिलैक्सिन इज समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द ओवरी. And this relaxin will basically do the dilation of the birth canal. So this will do the dilation of a birth canal. Dilation of birth canal. और ये बर्थ कैनाल के डायलेशन की वजह से व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली द चाइल्ड बर्थ विल हैपन ओवर देयर. ठीक है. नाउ the average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called as a gestation period. Something we have discussed this. तो आई होप ये वाली बातें आपको हमें समझ आ रही है. नाउ vigorous contraction of uterus at the end of the pregnancy causes expulsion of the fetus, and that is only called as my parturition. So ये vigorous contraction आपका हो रहा है, उससे आपका बेबी का push out होगा from the uterus, and that is called as my parturition. The process of delivery of the fetus is called as your parturition. So the process आप यहाँ पे होता है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a parturition. Something you know this. Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. अब ये जो आप पढ़ रहे हो, ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो. द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. दोनों से आ रहा होता है, राइट. दोनों से आपका ये आपका सिग्नल आपका आ रहा होता है, विच इंक्लूड अ माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. सो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंक्लूड योर माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. अब जब माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, that uterine contraction will go and tell the brain to release certain amount of oxytocin. और जब ऑक्सीटोसिन आता है तो उससे आपका ज्यादा बढ़ता है आपका यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. सो जितना ज्यादा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा आपका ऑक्सीटोसिन आके अपना काम करेगा. दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. The trigger release of this trigger release of the oxytocin, something I've told you, from the maternal pituitary, and because of that you will find oxytocin acts on the uterine muscle and causes the stronger uterine contraction, which in turn stimulate further secretion of my oxytocin. So this will just keep on happening. ये होता रहेगा, और उसकी वजह से you will find ultimately the parturition will happen. Because of all this you will find ultimately the parturition will be seen happening. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a stronger and stronger contraction. Same चीजें जो आपको यहाँ पे बताई थी. This lead to expulsion of the baby out of the uterus, called as your parturition. So this is what you will be finding happening in this. Now, soon after the infant is delivered, the placenta is expelled out of the uterus. बिल्कुल placenta भी यहाँ पे आपका बाहर आएगा along with the uterus after the expulsion of the baby. And after the expulsion of the baby, one has to go for a cutting of the umbilical cord. Umbilical cord में बाद में यहाँ पे cut कर दिया जाता है, so that now, yeah, the baby is out. चलिए, तो ये है आपका पार्चुरेशन. सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस. बहुत ही आसान सवाल है ये, जल्दी से इसका आंसर बताइए. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज व्हाट? यस, इट इज अ पार्चुरेशन. इम्प्लांटेशन आपका होता है यूट्रस के अंदर. लैक्टेशन इज समथिंग व्हिच विल हैपन आफ्टर द पार्चुरेशन, एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से आपका पार्चुरेशन आपके यहाँ पे हो पा रहा है. देन mammary glands undergo, now we are discussing something in terms of the lactation. So basically when we discuss lactation, you should know one thing very clearly, that this is when you will talk about this is something which will happen after the birth of the child, and this is an event in which you will find that there will be a milk formation and your ejection of milk will happen. Now when we talk about the lactation, which is going to be having, like, we basically, this is a period which will find nursing of the baby has been done. This is the period when you will find the nursing of the offspring has been done. Nursing of newly born offspring
Okay, so that is something you will find lactating period के अंदर यही आपका यहाँ पे इवेंट हो रहा होता है. दो हार्मोन आपके यहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं. एक तो आपका प्रोलैक्टिन होता है, which you know that will play a role in my formation of milk, and other is my oxytocin, ejection of milk. Initially, the milk formation which will be happening inside the mammary gland is called as colostrum, and colostrum is known to have a high amount of antibodies. So colostrum भी हम आप आगे देखेंगे that the colostrum will have a high amount of antibodies which are essential for the baby. So mammary glands undergo differentiation during the pregnancy. ये हम जानते हैं कि वो develop कर चुके होते हैं during the pregnancy under the help of my human placental lactogen. इनकी मदद से these mammary glands have developed. They produce milk, right? During the lactation, they produce the milk. Milk produced during the initial few days is called as a colostrum. And this colostrum is known to have good amount of your antibodies. अब अगर आपसे कोई आके पूछे कि कौन सी एंटीबॉडीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, इफ समवन कम्स एंड आस्क्स यू कि बताइए कौन सी होती है एंटीबॉडीज यहाँ पे, देन आप यहाँ पे कह सकते हो द एंटीबॉडीज आर गोइंग टू बी माय आईजीए. जो एंटीबॉडी आपको मिलती है मदर्स के मिल्क के अंदर, उनका नाम यहाँ पे आता है आपका आईजीए. So IgA is an antibody we will find in a very high amount in the mother's milk. और कुछ नहीं होता, हार्मोन कुछ नहीं होता, एंटीबॉडीज आपका में मिल जाती है. एंड इट इज अ हाईली न्यूट्रिटिव meal for the baby, and that is why it has been recommended for the next 6 months. So that is what you find. That is the only thing you have to know in terms of lactation. इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, right? Colostrum enriched in what? AB, both A and B, none of the above. What do you find in colostrum? Yes, it is going to be your antibodies. वो भी आपकी IgA वाली, right? Now let's solve some questions. अब हम यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Let's try to pick some questions over there. Soon after implantation, the inner cell mass differentiate into an outer dash, middle dash, and an inner dash. बताइए A, B and C आपका यहाँ पे क्या है? क्या बात है, लुधियाना ने का तो आंसर कर भी दिया इतने जल्दी. बाकी लोग भी ट्राई करिए. क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? लुधियाना ने आंसर भी चेंज कर दिया. All right. So now we have received all the answers, and yes, it is going to be your option B, right? So you'll have an ectoderm, you will have something like a mesoderm, and you'll have an endoderm. ये तीन लेयर आपको हमें मिल जाती है. Okay. मैं अगर आपको थोड़ी सी बात इसमें अगर आपको बताना चाहूंगा, then you can say that so endoderm is the one which will form the gut. So guts बनाता है आपको यहाँ पे endoderm. So basically gut या मैं कहूंगा आपको जो intestine होता है वो आपका endoderm आपको बना के देगा. Mesoderm is something which will form number of things, but कुछ important चीजें आप याद रख सकते हो, like your muscles, your skeletal system, you will have your heart. ये चीजें आपके यहाँ पे mesoderm आपको बना के देगा. And then you have the ectoderm over there. Ectoderm आपका यहाँ पे बन सकता है, बना के देगा आपको यहाँ पे आपका brain. So brain and the epithelial tissue. This is something formed by my ectoderm. All right, this question. Gastrulation means what? आपके हिसाब से बताइए कि gastrulation का यहाँ पे मतलब क्या होता है? What do you mean by gastrulation? So दो आंसर यहाँ पे आ चुके हैं अभी, तो बाकी लोग भी ट्राई करिए. It is going to be your formation of 3 germ layer. बिल्कुल आपका gastrulation का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि आपके यहाँ पे आप 3 germ layer आप अपनी यहाँ पे बना रहे हो. Ectoderm, mesoderm and endoderm. Read the question by yourself and give me a correct answer. Ludhiana has given us some answer. Sangrul, Taralwala and all other schools, right? Milk ejection reflex और fetal ejection reflex के लिए आपका जो common hormone आपका यहाँ पे आएगा, that is my oxytocin. थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑक्सीटोसिन आपका एक तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन आपके यहाँ पे मदद कर ही रहा है, उसके साथ साथ also having a role in the milk ejection. That is also something oxytocin is doing.
Which one is present in the urine of the pregnant women? इनमें से कौन सा हार्मोन यहाँ पे आपका होगा which you find being present in the pregnant women? Okay, one of the school has given the answer. MSG, then MST medical. एंड आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, आप लोगों का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, दैट्स अ करेक्ट आंसर. इट इज माई HCG. पहली बात ही आपको बता दूंगा मैं यहाँ पे दैट HCG इज वन ऑफ द हार्मोन जो ह्यूमन फीमेल यूरिन के अंदर मिल जाता है, काफी जल्दी मिल जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी. एंड योर प्रेगनेंसी किट विल डिटेक्ट द will actually tell you whether the girl has got conceived or not on the basis of this. So HCG का इवन इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रेगनेंसी डिटरमाइनिंग टेस्ट के लिए. सो प्रेगनेंसी डिटरमाइन करके जो टेस्ट होता है उसमें भी इनका अगर प्रेजेंस हुआ यूरिन में देन द गर्ल इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट. इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट गिव राइज टू व्हाट? इनर सेल मास जो आपका यहाँ पे होता है ये आपका किस चीज को राइज करेगा? व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर? इट इज राइट ऑलवेज गोइंग टू बी योर एम्ब्रियो. इनर सेल मास में आपको याद है इनर सेल मास इज अ स्ट्रक्चर जहां से आपको पूरा आपका एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा. सो दिस इज अ रीजन फ्रॉम वेयर द कंप्लीट एम्ब्रियो विल बी फॉर्म. हाँ बिल्कुल, इनिशियली इनर सेल मास के अंदर विल हैव द जर्म लेयर विल फॉर्म. इनिशियली क्या होगा, यहाँ बना के देगा आपको यहाँ पे जर्म लेयर. एक बार आपके यहाँ पे जर्म लेयर बन गए then those germ layer can give rise to your embryo. So this is what you find happening with the inner cell mass. और एक और बात है ना, inner cell mass will have your stem cells. Which has a property of pluripotency. Then इसका आंसर बताइए आप लोग यहाँ पे. Chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitate with each other and jointly form what? Okay. काफी जल्दी आपने आंसर कर दिया. That's true. It will form the placenta. So your chorionic villi and uterine tissue become integrated with each other to form the placenta. Okay. Then a regular, now read the question by yourself. I won't help you out in this. It's a statement based question. Tell me what can be the correct statement over here. All right, so I've received the answer from Jalandhar, and all the answers are coming from other schools are also going to be option D. ऐसा तो नहीं कर रहे ना आप लोग, एक ने कर दिया हम लोग भी कर देते हैं. Option D, please don't do that. Okay, so a regular cycling woman is not menstruating. Which of the following is most likely to be a root cause? So अगर menstruation suddenly अगर बंद हो रहा है women के जिसके अंदर regular cycle चल रहा था, so what you will finding in this, one of the common reason for this is going to be a fertilization of the ovum. If the ovum gets fertilized, you will find the menstruation will stop. Simple. There won't be any menstruation, and that is what you find happening over there. So a menstruation अगर आपके यहाँ पे बंद हो रहा है as a, like when you find this thing, that is one of, so that's one thing. Not always, it's majority of the time that can be an indicator of the pregnancy. Okay. This question again a statement-based question. You have to arrange them properly. So you have in front of you some of these statements. You have to arrange them properly. Take your time and try to give me a correct answer. We're getting a mixture of answers. Someone has said D, someone has said A.
Someone has also said C. Now that is the अभी interesting हो रहा है. Now it is happening. I'm getting different answers over here. C again. So C and D के मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाए. So now let's see how it is going to look like. Anyone has said option B? नहीं किसी ने नहीं बोला. चलो देखते हैं. So these are some of the events in front of you. These are some of the events you have in front of you, right? The very first thing, अगर हम इन सबको यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या होगा? It will all start with the secretion of the FSH. That will be the first event which will be happening. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया कि मेरा ऑप्शन ए और डी तो यहाँ पे रहेगा नहीं. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मेरा ऑप्शन ए और डी तो मेरा यहाँ पे वैसे ही हट गया. ओके. देन सिक्रेशन ऑफ एफएसएच करने के बाद जो अगली चीज आपके यहाँ पे होती है, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रोथ इन द फॉलिकल एंड oogenesis. आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. सो ग्रोथ इन द फॉलिकल एंड oogenesis विल स्टार्ट हैपनिंग अंडर दैट इन्फ्लुएंस. अब जब ये आपके यहाँ पे स्टार्ट होता है, सो दैट बिकम्स माय 2. अब जब ये आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आई हैव टोल्ड यू दिस, द अमाउंट ऑफ एलएच इन द ब्लड इज गोइंग टू इंक्रीज. द अमाउंट ऑफ एलएच इन द ब्लड इज गोइंग टू इंक्रीज. तो आपका एलएच का लेवल आपके ब्लड के अंदर यहाँ पे इंक्रीज होगा. सो सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द एलएच, ये आपका होता है यहाँ पे इंक्रीज. सो दैट इज बिकमिंग माय 3. सॉरी, इट इज माय 5th ना. ये आपका 3rd हो गया यहाँ पे और ये आपका आ गया 5th लाइन है. So you'll find 1, 3, 5. That's a sudden increase in the level of LH. और क्योंकि आपका LH आपका बढ़ेगा यहाँ पे, तो उससे क्या होगा? You will find now ovulation will happen. So after this, the ovulation will happen. And once the ovulation happens over there, after that, you know there is going to be a growth of the corpus luteum. सबसे एंड में आपके यहाँ पे corpus luteum आपको बनेगा यहाँ पे, and that is why. अब तो बेटा मैंने कर दिया, अब तो मैंने कर दिया क्वेश्चन, but still yes, it's going to be option B. So ऑप्शन ई बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने ध्यान से. These are the kind of question you have to do them very carefully. Okay. Read the question carefully and give me a correct answer. Fertilization in human is practically feasible only if. Military School Ludhiana has given me answer. Yes, it is going to be option A. The ovum and the sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. आपके ओवन और स्पर्म जो आपके यहाँ पे होते हैं. Someone has a question क्या? They can ask their question. MTS Molly, you have raised your hand. Okay. So O and sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmic region, जहाँ पे होगा fertilization. So that's going to be true. Then now let me just add. Just wait a minute. Let me just add. We have few more questions in this. Just give me a minute. Just one more minute. Just trying to add a couple of additional questions which are statement based so that we can have a practice of them as well. I think that's enough.
for now. All right, so okay, you should be able to see the screen just in a minute. We still have, yeah, we still have like 7 odd minutes. That's more than enough. Okay, so now come on over here and tell me the answer for the, I hope so मेरी screen दिख रही है. So here we are. Spot the odd one out. बताइए इसमें से odd one out आपके यहाँ पे कौन सा है? अरे बता दिया काफी लोगों ने. Why MTS Mohali is sad right now? Samrud is happy. Mohali is sad. What is happening? Okay, it is going to be your isthmus, right? चलो चलो बेटा आंसर करो चलो. So you'll have this isthmus is the odd one out over here, right? That is something you'll find in the fallopian tube. Then after this, you have ये वाला. Seminal plasma, the fluid part of the semen, is contributed by whom? So you have these 4 options, 4 statements, 4 options. You have to tell them कि कौन इनमें से आपका help करता है ultimately seminal plasma बनाने में. Okay, so people have started answering. Ludhiana has given me answer. Chalinder has given me answer. बाकी लोग, it is going to be it is going to be your option B, right? So seminal vesicle, prostata gland, and your bulbourethral gland. These 3 are the one which will play a role in my seminal plasma formation. अच्छा, इन तीनों में से कौन होता है जिसका जो सबसे ज्यादा secretion करेगा? Among these 3, seminal vesicle, prostata gland, and bulbourethral gland, किसका secretion सबसे ज्यादा आता है? Anyone? It is going to be your seminal vesicles. यहाँ से आपका आता है around 60% secretion तो आपका यहाँ से आ रहा होता है. आते भी आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. अच्छा, someone has a question, someone is raising their hand. Please ask your question. कोई सवाल है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हो बेटा. MTS Mohali has a question. MTS Mohali, yeah, you can ask your question. ठीक है. Which of the following is not a male accessory gland? इनमें से कौन सा आपका male accessory gland आपके यहाँ पे नहीं है? चलिए जल्दी आंसर करते हैं. So yes, in this, which of the following is not a male accessory gland? It is going to be your option B, right? Mammary gland is not a male accessory gland. Which among the following has 23 chromosomes? इनमें से किसके अंदर आपको 23 chromosomes मिलेंगे? So be careful. Which among the following has 23 chromosomes over here? Someone has said A. So it's a mixture of A and C. कुछ कह रहे हैं A, कुछ कह रहे हैं C. बेटा आपके स्पर्मेटोगोनिया के अंदर तो आपको मिलेंगे आपके 46 chromosomes. 23 थोड़े होंगे बेटा उसके अंदर, वो तो 2n होगा ना. Spermatogonia is going to be 2n. Spermatogonia is going to be 2n over here, right? So that will be having 46 chromosomes over there. आपका ये जो secondary oocyte आपका यहाँ पे होता है, secondary oocyte is the one which will be having my 23 chromosomes. क्योंकि आपका हो चुका है ना meiotic division, ये कर चुके हैं आपका यहाँ पे. It has done the meiotic division. Okay, so that is going to be a correct answer in this. So ये रहेगा आपका यहाँ पे correct answer. ठीक है. So ये याद रखना, it's your option C over here. I hope I'm audible to all of you. Okay, just wait a minute. हाँ जी, इसका आंसर आएगा. Read the question carefully and then give me a correct answer in this. Yes. Right. Tell me, क्या होगा इसके अंदर आंसर यहाँ पे? Read the statements carefully. Regarding the male pronucleus, which among the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? अगर करेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे तो गलत वाली ढूंढ लो. You are giving me all or saying option A यहाँ पे. पूछा क्या गया आपसे यहाँ पे? मेल प्रोन्यूक्लियस के कॉन्टेक्स्ट में which among the following statement is going to be correct? Now your option has changed to C. Okay, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है.
So now if I look at the statement 2, both head and neck of the sperm contribute to the pronucleus formation. That is wrong. ये गलत है बेटा, ये आपका गलत स्टेटमेंट है. आपका सिर्फ हेड के अंदर आपको प्रोन्यूक्लियस आपको मिलेगा वहां पे, यू डोंट हैव नेक का कोई वहां पे कंट्रीब्यूशन आपका होता नहीं है, तो यह तो आपका गलत हो गया. अगर 2 मेरे यहाँ पे गलत हो रहा है, देन आपका ऑप्शन ए भी यहाँ पे हट गया मेरा, और ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे हट गया. राइट. मेल प्रोन्यूक्लियस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात भी तो गलत है, ये बात भी तो आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी. योर माइटोकॉन्ड्रिया इज समथिंग यू फाइंड इन द मिडिल पीस, तो मेरा 3 भी यहाँ पे हट गया. अगर आप इतना भी, अगर आप 2 स्टेटमेंट अगर आप देख लेते हो ध्यान से, यू नो कि योर आंसर हैज टू बी योर ऑप्शन सी. तब भी आप देख लो, sperm head contains pronucleus having a diploid set of chromosome, ये तो wrong है. Sperm will always have a single set of chromosome, haploid. So ये भी आपके यहाँ पे wrong हो गया. So now what you have right now? The only thing you have right now is going to be statement 1. It is a sperm nucleus after entering the ovum at the fertilization. ठीक है. Even though statement बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया, but you know that कि बाकी 3 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे बिल्कुल गलत है. And here the statement is going to be true, जहाँ पे sperm nucleus के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है. तो yes, option C here becomes the correct answer. So be very careful when it comes to answering this kind of question. जल्दबाजी में मत करो, take your time. Now tell me the answer for this. Each testis has about, now read the statements carefully, आप अपने end से पढ़ो statement को and then tell me the correct answer. देखते कौन सा स्कूल सबसे पहले इसका आंसर देगा. MTS Medical, I am assuming that is Talwara. They are saying option A. Ludhiana is also saying option A. Mohali is also saying option A. MSG and Jalandhar A. Very good beta, very good. You should read your NCERT carefully. जो आप कर नहीं रहे अभी फिलहाल के लिए. Sangrur is giving me a different answer. Sangrur is saying option C यहाँ पे. जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए दिया, पहले हम उनको यहाँ पे एड्रेस करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी केयरफुली. स्टेटमेंट आप कह रहे हो कि ए यहाँ पे सही है, लाइक ओके दे हैव आस्क्ड ओवर हियर, ओके दे हैव आस्क्ड व्हिच आर द स्टेटमेंट्स आर गोइंग इनकरेक्ट, सॉरी या दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट, दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड. चलो हम देखते हैं यहाँ पे. सो नाउ यू हैव सेड ऑप्शन ए इन दिस. लेट्स सी. So each testis has about 25 compartment called as my testicular lobules. ये बात तो आपके यहाँ पे wrong है. That's an incorrect statement. आप ये बात आप यहाँ पे जानते हो, because you will have 250 compartments in the testicular lobule, so that is why this is wrong. तो एक तो चलो मैं यहाँ पे मिल गया. So one is something I have found over here, right? Then each testicular lobule contain only 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. ये बात तो आपके यहाँ पे correct है. This statement is going to be correct. You always know that a single your lobule will have around 1 to 3 seminiferous tubule जिसके अंदर आपके sperm बनाए जाते हैं. So that's a correct statement, है ना? Then Sertoli cells act as a nurse cells of the testes. So ये बात आपके सामने यहाँ पे रखी गई है, and that is also going to be a true statement. कि आपके जो Sertoli cells होते हैं, these Sertoli cells are the one that are called as my nurse cell. And these are the nurse cells which will be the one which will play the important role in my spermatogenesis के अंदर. तो ये बात भी आपकी यहाँ पे correct है. This is also going to be a correct statement. Sertoli cells are activated by FSH and secreted by adenohypophysis. This statement over here is also going to be your correct. बिल्कुल वो FSH उन्हें एक्टिवेट करते हैं जो आपका आ रहा होता है आपका anterior pituitary से. So now what is remaining right now in front of you? It's your option 1. Each testis has about 250 compartment called testicular lobules. ये बात आपके यहाँ पे गलत है, and that is why your option B here becomes my correct answer. This is what you have to know. So यहाँ पे आपका option B बनेगा as a correct answer. Sertoli cell act as a nurse cell of the testicles. That's true. ये आपके nurse cells होते हैं, इनकी वजह से तो आपका पूरा spermatogenesis आपके यहाँ पे हो पाता है. So this is why you will find option B becomes my correct answer. You should solve more number of statement based question. जितने ज़्यादा आप solve करोगे उतना ही आपका यहाँ पे understanding आपको बढ़ेगा. यहाँ पे you will be able to have a grip on the topic. ठीक है? So these are the questions which we have solved. And here your chapter gets completed. Chapter आपका यहाँ पे वैसे भी पहले स्कूल में भी complete हो चुका ही है. I would strongly recommend to solve as many as questions possible which are statement based questions.
बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये होता है, करने का फायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी हो रहा है उन स्टेटमेंट्स का कि किसमें क्या हो रहा होता, किसमें क्या नहीं हो रहा होता. एंड बिकॉज यू हैव टू टेक अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम टू सॉल्व देम, आपका स्पीड भी बढ़ता है. सो इफ यू सॉल्व 20 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद तुम कोई जनरल क्वेश्चन उठा के करते हो तो काफी जल्दी हो जाता है. सो योर बॉडी गेट्स, योर माइंड गेट्स कंडीशन टू सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू डू दैट. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. Next time when we'll catch up, we'll start with a new chapter. That is going to be reproductive health, or that is something we'll do. ठीक है. So alright, let's wrap this up. I think it's time भी आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है. We'll yeah, चलो. Bye everyone. Bye.